Hello everyone, my name is Yuvraj and I welcome you all for learning the new chapter in Medieval Indian History series, that is the Bhakti movement. The Bhakti movement is a type of a social or spiritual renaissance. There are so many questions asked, complex questions like, can devotion be achieved without rituals? Can God be accessible without priest? Or can the religious equality challenge the social equality present in this world? All these questions have been answered through Bhakti movement by our Bhakti saints. They have given the ideology which make the God accessible and for mass people movement. It become a mass people movement, easily accessible. So we should know what are the causes because of which Bhakti movement started. What are the core philosophy of these Bhakti movement? So all these things we will learn into this topic. See, today's topic in today's lecture we will go through the topics like what are the core philosophy or features of Bhakti movement, how it is different from the earlier Bhakti system or Brahman tradition of Vedic era. Then what are the causes that leads to the Bhakti movement? It is a movement, always a movement when it started. It has some causes. Then we will see the type of Bhakti. Then we will follow the most important Vedanta Darshan schools. Then later on we will find out the contributions of some of the important Bhakti saints like Kabir, Tulsidas, Guru Nanak Dev Ji. And at the last we will see the regional distribution of Bhakti movement. So through this we will get the whole information, a whole pictorial view of the Bhakti movements. So let's start and dig up in the cases of Bhakti movement. See the core features of Bhakti movement which changed it from the earlier Vedic era Brahman tradition is the relationship between the God and the devotee. Okay, so if we see the in the earlier era, that is in the Vedic time, the system of bhakti is Brahman tradition, in which there are some rituals or sacrifices or traditions through which only you can do the bhakti or prayer of God. That means it becomes an exclusive arena for some group of people. For some group of people, here we can call them priest or brahman. Priest or brahman or ऋषिगण. जो ऋषिगण थे वही बता सकते थे कि कैसे भगवान को पाया जा सकता है, मोक्ष क्या है, किस तरीके से हम उन चीज़ों पे पहुंच सकते हैं। तो वो ऋषिगण ही आपको समझा सकते थे क्योंकि वो एजुकेटेड थे। मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट जो आपने पढ़े होंगे, उपनिषद हो गए, वेदांत हो गए, ब्राह्मण हो गए, ऋग्वेदास हो गए, ऋग्वेदा और बाकी तीन वेदा, दे ऑल आर रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज विच इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर. So normal genuine people are not able to get it or understand it. That means bhakti become inaccessible. Bhakti become inaccessible to the common person. Bhakti become inaccessible to the common person. So now what happened during this bhakti movement? We find that the change. So the conditions here, that there is a God, here is the devotee, and if you have to pray the God or do bhakti, there are some intermediaries which are present, which know how to do it. This is the condition during the bhakti period. But later on in bhakti movement, this condition has changed. They have given the different perspective to do bhakti or prayer.
They have given or they have started the new movement with new ideology which make the God accessible. It is when the thing is easy and easy to implement, then only the things become accessible. So they have made devotion or bhakti so easy to do or in different forms that anyone or person of on the planet can do it. ठीक है, so same चीज. तो now we have to see the features of भक्ति मूवमेंट. ऐसा क्या था जिसके कारण ये भक्ति मूवमेंट इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ और इतना ज़्यादा एक्सेसिबल हुआ. आज भी अगर हम देखते हैं तो हमें दोनों फेजेस मिलते हैं भक्ति के. एक जगह यज्ञ भी चल रहा होता है और दूसरी जगह कीर्तन भी हो रही है. तो दोनों चीज़ें भी आज भी एक्सेप्टेबल है, बट इन द डिफरेंट फॉर्म्स. सिंस दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं तो हर व्यक्ति अपने तरीके से भक्ति कर पा रहा है. तो कोर फीचर्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट विल बी सीन बाय अस. The first most important feature is the relationship between God and devotee. Now this relationship is direct. There is no need of intermediary. The God is there. We have individual. So person can directly pray to the God through any method. It can be music, जैसे कीर्तन वगैरह करते हैं, भजन वगैरह करते हैं. इट कैन बी सर्विंग टू पीपल. इट कैन बी केयरिंग फॉर नेचर और एनिमल्स. किसी भी तरीके से आपको जो भी इच्छाएं हैं, इफ यू आर डूइंग मेडिटेशन, योगा, वट एवर यू आर डूइंग, if you are thinking of God and doing devotion, then it is called a bhakti. अब देखिए ये कितना आसान हो गया कि मुझे अगर भगवान को याद करना है या मुझे भगवान तक अपनी चीज़ें पहुंचानी है तो मैं डायरेक्टली अपने मेथड के अनुसार वो चीज़ कर पा रहा हूँ. तो फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज हो गया कि भाई इजिली एक्सेसिबल हो गया. देर इज नो नीड ऑफ priest for everything. You can do by just doing the meditation, chanting Om, you are doing भक्ति. गिविंग फूड टू द नीडी पर्सन और हंग्री पर्सन, ही इज गिविंग दुआएं. बोलते हैं ना दुआ में याद रखना, तो दुआ में याद रख रहे हो तो आप ऑलरेडी भगवान के पास अपनी चीजें पहुंचा रहे हो. तो फर्स्ट इज द रिलेशनशिप विद द गॉड. सेकेंड, दैट दिस रिलेशनशिप इज लाइक अ लव अफेयर. दैट इज लव और अफेक्शन वाला रिलेशनशिप. दीवाना बन के आप चाह रहे हो भगवान को. बोलते हैं ना राधा मूवमेंट चल रहा है तो उसमें राधा जी को याद करो, राधा जी का स्मरण करो. श्री कृष्ण मूवमेंट हो रहा है, नाचो गाओ और भगवान में बस लीन हो जाए. तो भक्ति वर्ड ही आया है भज से, जिसका मतलब ही होता है सरेंडर योर सेल्फ, फुल्ली सरेंडर योर सेल्फ टू द गॉड. ठीक है, सरेंडर योर सेल्फ टू द गॉड without any important means or any greediness. Just surrender yourself to God or for the devote yourself to the God. So this affair will be like a love affection. समझ में कि आप बिल्कुल भगवान को दीवाना बन के चाह रहे हो. मीरा मतलब मीराबाई जी थी, वो लव मतलब कृष्ण जी से प्रेम करती थी. सूरदास लव्ड द कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ बाल कृष्ण, गोपाल के रूप में चाह रहे थे और सिर्फ उन्हीं का गुणगान गा रहे थे. तो दिस इज द वे भक्ति हैज स्टार्टेड. देन वी हैव थर्ड वन इज that it leads to the social equality. It leads to the social equality. It is obvious that if we don't need any person in between the if we don't need the person for doing intermediate for doing prayers, that means there is no need of classification of people into the exclusive classes which was done during the Varna system. So social equality will be managed, or these people are against the caste discrimination. They have protested against the caste discrimination and rituals which leads to the classification of people or oppression of the people. Next is this, that all bhakti movements or bhakti ideas has propagated
ethical or moral values. सभी लोगों ने, चाहे वो ट्रुथ हो, सत्य बोलने की बात हो, इफ इट इज कंपैशन, करुणा की दिखाना हो, या हेल्प करना हो लोगों की, ठीक है, सर्विस और हेल्प, ऑल दिस आर द फीचर्स ऑफ दिस भक्ति मूवमेंट. बोलते हैं ना, ट्रुथ, सत्य को तो इतना ज्यादा कहा गया है कि जैसे कबीर ने कहा गया है कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप. देर इज नो डिवोशन मोर देन दी saying truth, and there is no evil by saying lies. तो साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप. तो ये सब एथिकल वैल्यूज इन्होंने प्रोपोगेट करी थी. Now we will look into the different types of causes. What are the causes for this movement? See, there are so many causes, but most important is the, if you understand the environment or conditions of that time when movement started, you can understand that these are the causes. For example, this bhakti movement is started during 8th century and it peaked around 17th century. So causes can be divided into the religious causes, as I already shown you, that you can see the Vedanta or Vedic traditions has lead to the classification of the people. So they will not, people are the religion become inaccessible. So these are the Vedic traditions promoted classification, which leads to the second causes, which is social causes, that is the presence of caste discrimination. It leads to the caste discrimination. सारे नियम, सारे रिचुअल्स सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए बच गए थे, बाकी सब लोगों को अपने हिसाब से काम करना पड़ता था. बाकी थर्ड वन इज द पॉलिटिकल causes. As you know that from 7th century AD or from 712, the Islamic invasion has started. Which leads to the more conversion, and people have moved towards away from the Hinduism religion. So there is need for the relaxation in the traditions or rituals of the Vedic era. So that's why it has been started. Now we will look into the types of bhakti movement. What are the different types? See, I said that you can do bhakti or devotion in any form in which you like. You can sing, you can serve the people, you can care for the nature, whatever way you want to do, you can do the bhakti movement. But broadly, these movement are classified into two types. One is Nirgun Bhakti. One is Nirgun Bhakti and other is Sagun Bhakti. See, gun means hota hai attributes. Gun means attributes. Okay. So Nirgun, if you go by the literal meaning, it means attribute less. It means attribute less. So is it the God is attributeless? God has no qualities, nothing? No. If you take the literal meaning, you are going wrong way. So the correct way is the God is beyond attributes. You cannot measure God in attributes. ऐसा नहीं बोल सकते कि इतने सुंदर भगवान हैं, इतने बड़े हैं, इतनी उनकी ये शेप था. नहीं. That means these people worship God in the formless form. कोई फॉर्म नहीं है, क्योंकि भगवान को बोला ही, बताया ही नहीं जा सकता कि वो इस शेप के हैं, ऐसे दिखते हैं. कण कण में है भगवान, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा. तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट वी कैन नॉट से और वी कैन नॉट थिंक ऑफ
any shape of God, any quality of God. God is beyond qualities. देखिए ना, अगर मुझे किसी क्वालिटीज में बोला जा रहा है कि मेरी इतनी हाइट है, मैं ऐसा दिखता हूँ, और इन्हीं में आप गॉड को भी मेजर कर रहे हो, सो दे आर अगेंस्ट इट. बोले गॉड कैन नॉट बी मेजर्ड in qualities. God cannot be measured in qualities, so they are formless. वर्शिप करते हैं. जबकि यहीं पे शगुन भक्ति में क्या करेंगे आपके, इन फॉर्म और विथ एट्रीब्यूट्स गॉड की वर्शिप होती है. ठीक है, कि गॉड है सम एट्रीब्यूट्स, जैसे सावले सावरिया, ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम. सो वी आर पुटिंग सम एट्रीब्यूट्स टू द गॉड एंड इट लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ इनकारनेशन और अवतार. जाहिर सी बात है, जब आप किसी का शेप सोचोगे, कुछ और सोचोगे, तभी आप भगवान को अवतार के रूप में मान पाओगे. तभी तो आप जब ह्यूमन बीइंग की तरह सोचा है, तभी तो बोला कि भगवान ह्यूमन बीइंग का अवतार लेके आए थे. तो कंसेप्ट ऑफ इनकारनेशन. और यहीं पे it allows idol worship or murti puja. It allows idol worship or murti puja, but here idol worship is not allowed. No incarnation, no idol worship. Got it? So this is the two types of bhakti. One is nirgun bhakti, that is attributeless. No, it is beyond attributes. And the other one is the shagun bhakti, in which the god has been made with attributes, and incarnation and idol worship is allowed in this. So let's, so for shagun bhakti we have some sant like Tulsidas, Surdas, and for Nirgun Bhakti, we have saints like Kabir ji, Guru Nanak Dev ji. Okay, so now we will see what are the different groups who followed different bhakti traditions, where they propagated their ideas, what are their ideas. So first of all, different philosopher or different bhakti saints are there present, but the core philosophy or core ideology of each one is same, that they want God to be accessible to for every people. They are against caste discrimination, they are against evil ideas, they want प्योर और आइडियल प्योरिटी इनसाइड, मतलब इनर प्योरिटी चाहिए थी. तो वो उनके सब सेम है, वो उनके सारे फीचर्स सेम है. नाउ वी विल सी डिफरेंट भक्ति सेंट्स और ग्रुप ऑफ भक्ति सेंट्स which contributed in the Bhakti era. So from 8th century, in 8th century AD, we have two group of saint. One is Alvar group. It is a group of 12 saint, or we can also call them poets, because bhakti is mostly in the form of poetic form. See, out of these 12, one is very famous because she is the only female saint. Her name is Andal or Shri Andal. Okay, their text, they have written the text which is called as Divya Prabandhan, which is called as Divya Prabandhan. And this group is the devotee of Vishnu. The devotee of Vishnu or Lord Krishna. Lord Vishnu or Lord Krishna. The other group is Nayanar. The other group is Nayanar. It is a group of 63 saints who worship Lord Shiva. They worship Lord Shiva. Their famous text is Tirumurai. Their famous text is Tirumurai. And both of them are found, both these groups are found in साउथ इंडिया. ठीक है, साउथ इंडिया में पाए जाते थे. एंड फ्रॉम साउथ इंडिया the bhakti movement propagated to the North India later on in 11th to 12th century. So bhakti movement started from the South India from these two groups. One is Alvar group who worship Vishnu and other is Nayanar.
Okay, so let's see the other groups. We have Vedanta Darshan. ठीक है, in Vedanta Darshan we have Brahma Sutra. Brahma Satyam Jagat Mithya Jivo Brahmev Na Para. So by this, by the interpretation of Brahma Sutra, there are different schools of philosophy arrived, and which laid the foundation of different movement started by the different groups. But the foundation started from here only. That is, one is Advaitvad. One is Advaitvad, that is, which propagated strict monoism. That is, only Brahm is real, rest is delusion. It is propagated by Shankaracharya. It is propagated by Shankaracharya. Later on in 11th century, Ramanujacharya has propagated that though God is, yeah, Brahm is real, but other soul and world is also real. तो रामानुजाचार्य ने 11th सेंचुरी में बोला कि भक्ति के थ्रू, बाय भक्ति यू कैन अचीव मोक्ष. ही स्टार्टेड द भक्ति मूवमेंट इन द 11th century, and his disciple Ramanand, his disciple Ramanand is the person responsible for taking bhakti movement to नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में लाने के लिए इन्हीं के डिसाइपल ने भक्ति मूवमेंट को नॉर्थ इंडिया में लाए थे. After him, we have Dvaitvad, concept of Dvaitvad, in which Brahm and world both are considered as real, and people have to do bhakti or devotion to achieve Brahm, to achieve moksha. He, the propounder of this concept, is Madhvacharya, who also started the Madhvacharya, which helped in promoting the Hare Krishna movement. Later on, Chaitanya Mahaprabhu, who is the disciple of Madhvacharya, a follower of Dvaitavad philosophy, will do the Hare Krishna movement. Then we have Vallabhacharya, from Gujarat, who gave the concept of Pushti Marg, who gave the concept of पुष्टि मार्ग. ठीक है, पुष्टि मार्ग का कंसेप्ट बताया कि विद द गॉड ग्रेस यू कैन ओनली अचीव द मोक्ष. एंड देन वी हैव निम्बर्गाचार्य, who propagated Ved Abhed philosophy. Who propagated Ved Abhed philosophy. So from these Vedanta darshan we found it that by the interpretation of single Brahma Sutra, different darshan or different philosophies came, which leads to the further propagation of bhakti movement. Now we will look into the important bhakti saints who propagated different ideas of bhakti traditions. First is Kabir. Kabir is a weaver. सोच सकते हो, he is a weaver. बुनकर थे ये, और इन्होंने ही सो अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, इज अगेंस्ट कास्ट और कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन, एंड इवन ही सेज दैट अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलते तो मैं तो पूजूं पहाड़. सो ही इज अगेन द रिचुअल्स लाइक आइडल वर्शिप कर रहे हैं आप. और इनको हमने बताया था ना कि ये निर्गुण संत थे, फॉर्मलेस मोड में भगवान को पूजते थे, निर्गुण संत थे. इनके दोहे आज भी बहुत फेमस हैं, जो कि बीजक के रूप में लिखे गए हैं, जो कि बीजक के रूप में लिखे गए हैं, बाय देयर डिसाइपल, कंपाइल किए गए थे. और इन्हीं के कुछ दोहे और इनके बारे में आदि ग्रंथ में भी लिखा मिलता है. कबीर के बारे में आदि ग्रंथ के बारे में लिखा मिलता है. कबीर इज द डिसाइपल ऑफ रामानंद, हु इज डिसाइपल ऑफ रामानुजाचार्य, हु इज द डिसाइपल ऑफ रामानुजाचार्य. तो रामानुजाचार्य के डिसाइपल थे रामानंद, उनके डिसाइपल थे कबीर, और उन्होंने ये सेम फिलॉसफी निर्गुण भक्ति के थ्रू मूव करी. इनके अलावा थे गुरु नानक देव जी.
ये भी डिसाइपल थे रामानंद जी के। Guru Nanak Dev Ji in 15th century propagated three main teachings, which is Vand Chakna, नाम जपना एंड कीरत करना। वंद चखना, कीरत करना और नाम जपना। सो फ्रॉम दीज थ्री ट्रेडिशंस और दीज थ्री टीचिंग, नाम जपना मीन्स स्मरण, हम बोलते हैं ना ओम चैंटिंग करो, सो दे अगर वाहे गुरु बोलते रहो। कीरत करना मीन्स ऑनेस्टी के थ्रू वर्क करो, डू अर्न योर लाइवलीहुड बाय ऑनेस्ट वर्क विदाउट करप्शन। The third one is one chakna. Whatever you earn by the honest, share with other. And the concept of langar comes from here only. Okay. Then we have the next one is Chaitanya Mahaprabhu. Then we have Chaitanya Mahaprabhu. He propagated bhakti movement in the Bengal region. He propagated bhakti movement in the Bengal region. And there is he propagated the concept of Sankirtan. Sankirtan को संकीर्तन वाला कंसेप्ट इन्होंने प्रोपोगेट किया था। संकीर्तन वाला कंसेप्ट इन्होंने प्रोपोगेट किया था। This movement, he had started the movement of Hare Krishna, Hare Rama, which is later accepted by ISKCON group. सो संकीर्तन मूवमेंट हुआ, बंगाल में इन्होंने फॉलो किया, हरे रामा हरे कृष्णा, और इस्कॉन ग्रुप ने किया। इन्होंने प्रोपोगेट किया था गौड़िया डांस। कौन सा डांस किया था प्रोपोगेट? गौड़िया डांस। सो संकीर्तन पे भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। गौड़िया डांस देयर इज नो क्वेश्चन आस्क्ड, बट द इट इज द पोजीशन और पोटेंशियल टू बी आस्क्ड बिकॉज इट इज सम हाउ equivalent to the other classical dances of India, but it is not itself a classical dance. और हरे कृष्णा हरे मूवमेंट चालू किया था। ऑलरेडी संकीर्तन पे क्वेश्चन तो आ चुका है। देन वी हैव तुलसीदास। He is a devotee of Lord Ram. तो कौन सी भक्ति हो गई इनकी? शगुन भक्ति। कौन सी भक्ति हो गई? शगुन भक्ति, क्योंकि एट्रीब्यूट्स में देख रहे हैं भगवान को। तो कौन सी भक्ति हो गई? शगुन भक्ति। ही रोट रामचरितमानस, which is a translation of, or with some modification, the translation of Balmiki Ramayana, which is written in Sanskrit. ठीक है? He had written so many religious texts which are even used today. Or he is a promoter of, he is against caste discrimination and made Lord Ram doing bhakti by just chanting those doha and chaupais of Ramcharitmanas. Now after that we will see the different bhakti saints in the different regional area of India which has propagated bhakti in different area. So in the Bengal region we have already seen Chaitanya Mahaprabhu. In Assam region we have a bhakti saint called Shankara Dev. He also propagated the Lord Vishnu or Lord Krishna bhakti, and he is main proponent of Manipuri dance.
इनके टाइम पे क्या हुआ था, मणिपुरी डांस विच इज वन ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया वाज प्रोपोगेटेड बाय शंकर देवा एज अ मीडियम ऑफ डूइंग भक्ति, एज अ मीडियम ऑफ डूइंग भक्ति. Then in the Maharashtra region, we have different bhakti saints at different times. For example, Eknath, Tukaram, Gyaneshwar. All them, all of them has propagated bhakti to the Vitthal Bhagwan, Vitthal और विठोबा भगवान of पंडरपुर रीजन. जो पंडरपुर में आपको पंडरपुर यात्रा देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में. और दिस सेक्ट हु डू दिस पंडरपुर यात्रा इज कॉल्ड वाराकारी सेक्ट. इनको क्या बोला जाता है, वाराकारी सेक्ट. इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में. मणिपुरी डांस पे भी क्वेश्चन आ चुका है शंकरादेव पे. तुकाराम पे भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में. सो ऑल ऑफ दीज हैव अ पोटेंशियल टू बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन. सो विठल और पंडरपुर मूवमेंट you can say. Then in the Karnataka region, by Basavana, Bhakti saint called Basavana, in 12th century Lingayat movement is started. Which movement? Lingayat movement is started. So they have given they worship a Shivji in the form of ling, which they wore in there as a necklace. So Lingayat movement has been started. Rest philosophy is same. So I am giving the important points which can be asked in the questions with these bhakti saint. Then the Maharashtra tradition, we have text called Abhang. Abhang में ये पूरी जो उनकी भक्ति ट्रेडिशन और गीत म्यूजिक सब कुछ है वो लिखा हुआ है. तो इनकी बुक कौन सी हो गई, अभंग. देन वी हैव द नेक्स्ट वन इज इन कश्मीर वी हैव अ फीमेल सेंट कॉल लाल देड़. शी हैड कंपाइल्ड बुक बाय मेकिंग अ होमोजेनाइजेशन ऑफ सूफिज्म एंड शिवा ट्रेडिशन इन वाक. इनको क्या बोला गया है, वाक. Similarly, in Rajasthan area, we have Dadu Dayal and Mirabai. Mirabai is also a female saint. In this region, we also have Surdas. Surdas मैंने बताया ना कि उन्होंने बाल रूप में श्री कृष्ण को पूजा है. उनकी आईज नहीं थे, ऐसा बोला जाता है कि ही इज अ ब्लाइंड पर्सन, बट उन्होंने फिर भी मन ही में सोच रखा था कि मेरे बाल गोपाल ऐसे लगते थे. तो सूरदास इज दी पर्सन फ्रॉम दी उत्तर प्रदेश रीजन. ठीक है, भक्ति सेंट from Uttar Pradesh region. So by this we have known the different regional distribution of Bhakti movement at different time and the main important saint and their contribution. So with this the Bhakti movement class has been over. So it has, this chapter has the potential to be asked. हमेशा एक से दो क्वेश्चन तो guaranteed भक्ति movements आते हैं, either in the form of dances or in the form of text or in the form of the personality or name or their ideology. So you should this is a very important chapter which we are going to and the contribution of Bhakti movement leads to the social equality और the accessibility of religion. Religion को क्या हुआ, mass movement बनाया है. तो इसी के साथ with this I am ending this lecture. Thank you so much.